बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न एंड मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आप ये देखते हैं ट्रांसमिशन एवरी फ्राइडे को, और एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस म्यूनिसिपल इलेक्शन कैंपेन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड वी हैड फ्यू कैंडिडेट्स and similarly on the same fashion we will have other candidates on our television time to time inshallah। लेकिन अगर आपने आज हमारा ये प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, और my request would be that during this show give us a call and be a part of this transmission, exchange your sentiments with us। The number to reach us is 905-670-4114 is on our हमेशा हमारी लाइंस जो हैं वो उसके जो नंबर जो हैं वो स्टूडियो के ऊपर रहते हैं, उसकी स्क्रीन के ऊपर। एज़ यू ऑल नो दैट एज ऑफ येस्टरडे देयर वाज द क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी, शी passed away and they are in mourning, and it's a sad thing that she passed away। So the king, the third, which is Prince Charles, that he will be taking over the throne। So I mean, as a Canadian, we all value, the relationship and the friendship we have with England, as you all know। So it has been a sad affair for all of us to hear this message। आज ख़ास तौर पे जो हमारे प्रोग्राम है उस हवाले से couple of things are very important for you to understand also as the viewers, that कि हमारी कोशिश ये होती है कि when we come here on this channel we bring out to you a lot of awareness to our communities, and चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, वो पुलिसिंग में हो, वो इलेक्शंस के हवाले से हों। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के तवस्सुस के थ्रू जो मैसेज है that comes out to you loud and clear, and when you are going out to vote on October 24th, you would know कि आपके candidates कौन हैं, because when people are coming to you at the doors for the first time, you may not have seen them before। तो आप उनकी बात सुने, उनका मैंडेट सुने, उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, हाउ लॉन्ग दे बिन सर्विंग द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में रहते हैं नहीं रहते हैं। अगर आप इस मुल्क में नए हैं और आप चाहते हैं कि यू वांट टू इंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू। और ये आपकी सिविक ड्यूटीज़ भी हैं कि जब इलेक्शंस कॉल होते हैं आप इलेक्शंस में जाके वोट भी करें। हमारे साथ आज एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे बैठे हैं, जो एक आर्टिस्ट भी हैं, एंड as much as I know him, और he started a very nice restaurant in Brampton। संदीप साहब हमारे साथ हैं। हेरिटेज इंडिया का नाम अगर आपने रेडियो पे सुना होगा, तो it is giving me a pleasure that I bring on to you him on our platform, and then people can see him who he is, and we can talk to him about his journey into this hospitality industry and what he has been doing in the past in India as well, and especially now in Canada, the new venture that he have started, उसमें वो क्या कर रहे हैं। We have a candidate from Ward 3 in Milton, Mr. Adil. He is with us। He is a police officer by profession, and now he's running for your voice in the Ward 3 in Milton। We will talk to him in detail regarding his accomplishments and his background into especially this political thing that he like to do, and like to be a better voice। I probably would say that working as a police officer, he's serving the community, but I think being a police officer and now coming in with that portfolio of that background he has, and then he can serve you better, I believe, and we'll talk to him about inshallah on that as well। बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये भी है कि जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी रहता है, और फ़ीडबैक के लिए voiceoftorontotv@gmail.com जो है वो हमारा ईमेल एड्रेस है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @voiceoftorontotv, और हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, votmedia.ca, दैट इज़ आवर वेबसाइट एज़ वेल। एक दो मैसेजेस हैं, मैं वो पहले आपसे शेयर करता चलूँ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो फ्लड रिलीफ की जो बहुत सारी काविशें यहाँ हो रही हैं कनाडा में, उस हवाले से मुस्लिम वेलफेयर कनाडा इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आज मेरी बात हुई। उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक $50,000 का जो डोनेशन यहाँ से इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजा है। उनके जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ होंगे आज जो ये ट्रांसमिशन, हम उनसे भी बात करेंगे और आगे फर्दर वो क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे और उनके ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें विमेन शेल्टर चल रहा है, उनका एक डेली फूड बैंक होता है वो भी चल रहा है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम के लिए उनका एक प्रोजेक्ट है, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। सो वी विल टॉक टू हिम ऑन दैट।
हमारे एक और दोस्त पाकिस्तान से मोहम्मद साबिर साहब, जो कि हाफिज़ कुरान हैं और कुरान की तालीम देते हैं बच्चों को थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका। उनका ख़ास तौर पे मैसेज जो है वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी टीवी स्क्रीन पे उनके जो नंबर हैं, मोहम्मद साबिर उनका नाम है और उनके नंबर हैं 923413076327। ये नंबर हमारी स्क्रीन पे हैं। अगर आप तजवीद के हवाले से या कुरान आप पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ही डज़ एवरीथिंग। ख़ास तौर पे उन्होंने हमें पाकिस्तान से कॉल करके रिक्वेस्ट की कि हम उनका जो नंबर है वो हमारे जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचाएँ। तो ये नंबर आप हमारी स्क्रीन से ले सकते हैं और उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि विदाउट फर्दर ड्यू आई गो टू आवर टू गेस्ट टुनाइट इन आवर स्टूडियोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मिस्टर संदीप सिंह। सर, गुड इवनिंग टू यू एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो। जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए, और आपसे गुफ्तगू करने में मज़ा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे साथ आदिल हैं, ही इज़ विद अस एंड आई थिंक I will ask him talk to him in English language probably. I think it will be a good thing because a lot of grassroots level people who are watching you tonight, especially with your age and what you've been doing in the past. Thank you again for coming into the studios and thank you for what you do. I understand, we come also from a police officer family and you're also a police officer by profession. But again, coming into and serving as a counselor, and that would be a great thing actually for the ward of Milton. I think संदीप साहब, इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग हैं वो दे केम फॉरवर्ड और वो काउंसलर्स के लिए खड़े हैं, रीजनल काउंसलर्स के लिए खड़े हैं। और ये खुशाइंद बात है कि लोगों में जो एक पॉलिटिकल एट्रीब्यूट है वो बढ़ रहा है एंड पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू इट। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल फील्ड में आना और बैक होम जो पॉलिटिकल फील्ड हमारी रहती थी, बहुत फ़र्क है। ट्रू। देखिए, यहाँ मकसद रहता है कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं, आप कैसे सर्विस दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अक्रॉस दी कम्युनिटी कोई भी हो। जी जी। ये फ़र्क जो हमारी नई जनरेशन में आ रहा है जी, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं इसके लिए आदिल साहब का भी इनको मैं पूरा बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि ये भी जीत के आए आगे। और इतने यंग जो जनरेशन जो सामने आ रही है, ये वाकई इससे गुड न्यूज़ है। इट इज़। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि हमारे साथ हेरिटेज इंडिया, अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट दैट हैज़ ओपन्ड इन ब्रैम्पटन ऑन मेन स्ट्रीट। इनका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस शो जो है वो आप कैप्चर कर सकेंगे। इनकी डिटेल्स जो है हमारी स्क्रीन पे आप देख सकेंगे। लेकिन इनकी जो जर्नी है संदीप साहब से, वो हम उनसे पूछेंगे कि व्हाट ब्रॉट हिम इनटू कनाडा एंड देन ही स्टार्टेड दिस रेस्टोरेंट बिजनेस एंड ऑल दैट। इसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट दैट आई हैव बीन टोल्ड। बट आज कोशिश करेंगे इनसे दिल की बातें करने के लिए कि वो जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरह का आर्टिस्ट है। नाउ कमिंग बैक टू यू आदिल, लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. A lot of people who are watching you tonight, first of all, like your background as a policing, and then what motivated you to come forward and run for this councillor position? Yes, well, absolutely. First of all, thank you very much for having me on this program. I really appreciate this. Oh, no, and you're it's welcome. a great You're opportunity. Well, just a little bit about myself before I go into that. Yeah. I was originally born in Pakistan, and I moved to Canada with my dad and mother when I was 1 year old. We originally, so I was pretty much raised here, but we lived in Toronto for a bit, and then in 2012 is when I moved to Milton with the family. Achha. And I've been there since, so it's been about 10 years. And I went to school there, high school there, and then I graduated. So you know the whole area, the whole demographic. Yes. You also know what is the shortcomings in the schools that needs to be addressed, and so if I try to understand correctly, a lot of these positions, like the councillor positions, people are coming forward. Some of them who are existing councillor running for regional councillor, some of them first time they're coming in. Yep. How many seats are available there, or is like anybody can run and
or there are a number of seats that have to be filled? Let try to understand that analogy. So first of all, Milton is divided up into 4 parts, 4 wards. Okay. Each ward has 2 councillors elected to it. One of those councillors is the local and regional councillor, okay, and the other one is a local councillor. Local councillor is a part-time position in terms of work hours, and whereas the regional position is full-time. It's a full-time. You also vote for a mayor for the entire town or municipality that you're running in. You vote for a public school and Catholic school board trustee, and you vote for a regional chair as well. So it's a bigger ballot with multiple categories, and it's essentially voters get to decide after every 4 years who will independently represent them in these categories in terms of how their municipality will look like and function over the next 4 years. So municipalities are in charge of your everyday things, right? Your transit, your funding for the fire department, services, the roadways, housing, zoning, right, those type of things. Okay, okay. So I'm going to try to have a conversation going on the both sides. Sure. You know, we'll talk to Sandeep ji, we'll come back to you. Yep. But before I go to him, what are some of those challenges that you think the Ward 3 people are facing right now that you would like to address them if you get elected on October 24th? Yes, so what I've done to come up with the priority list that I'm pitching to voters at the door is I've had many interactions with voters at the door before coming up with those priorities, and what I repeatedly hear at the door is that the main concerns seem to be road safety. What can council do to make our roads safer? So I'm proposing that we look at different ways to... You mean a better infrastructure or safety-wise or the driving-wise? Infrastructure that has proper traffic calming measures in place, looking at new technology-based enforcement, like photo radar, speed cushions in certain areas, like those vulnerable areas like school zones. Like other municipalities, I think Peel Region, Mississauga has those tools. So adding those tools in the toolbox to make our roads safer. These are all municipal things that the municipality can control. Right. Another priority is street parking. In Milton, there are very strict bylaws in relation to people's ability to park overnight. Okay. Currently, there's 18 parking permits that you can get for free per plate, per vehicle per year. I'm proposing that we increase that because Milton's a family-based town, and now kids have grown up to that's post-secondary student level, whereby they need cars to go to college or university. So they don't have space on their driveway to be able to fit an extra car. Yeah. But at the same time, they don't have the financial potential capability to afford a house with a bigger driveway, like some people argue. So having that leniency by increasing the parking exceptions and not allowing for people to get a ticket if they're parked on the daytime for 5 hours or more on the road. So changing those 2 things. And obviously, like you mentioned, infrastructure as well, public services. Milton's growing really quickly. Yeah. It has grown, it's become very diverse as well, and there's new challenges that come with that growth. We need to do a better job at investing in our public services, such as transit, by connecting it to nearby municipalities, making sure our fire department has the resources it needs, which it currently is lacking. The fire department has been calling for more funding for some time now, so we need more firefighters, and investing in getting our roads widened expediently and keeping roads in good repair, those type of things to keep up with the growth. And recreational amenities, right, like sports centers and parks and recreation facilities. Right. Those are things that people are saying at the door as well. And the last priority, after consulting with voters, I've come up with is, a lot of people say that I don't know who my councillor is when I knock on their door. That needs to change. People should know who their elected officials are. That's exactly what I just said earlier in my opening. Exactly. That you need to understand that who the person is, who you're going to be voting for, how well you know that person, what that person has done in your riding, who is running for, and what are his or her achievements are. Exactly. These are very important. Those are very important things, and I think that the person that's running for that position needs to be proactive and let people know what that is, rather than people having to. People should be doing their research, absolutely, but the elected official that's currently in government and the elected official that's running for election, hopefully, it needs to do that proactive way of getting out, consulting with the community and telling them what they have to offer to earn their support coming into the election. So, व्यूअर्स, हमारे साथ संदीप सिंह साहब बैठे हैं आज, जो कि हेरिटेज इंडिया के ऑनर हैं, और हमारे साथ आदिल बैठे हैं, आदिल खालकी, हु इज़ अ पुलिस ऑफिसर रनिंग फॉर अ काउंसलर इन वार्ड 3 इन मिल्टन। इससे पहले कि हम फर्दर और आपसे बहुत सारी जब बातें करें, और
लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हम एज अ टीवी स्टेशन हमारी कोशिश ये है कि एक तो वी आर एक्सपेंडिंग और वी आर लुकिंग फॉर मार्केटिंग पीपल, और हमने उसका एक ऐड जो है दैट्स ऑन आवर सोशल मीडिया एज वेल। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया फॉर गेटिंग बैक टू अस एंड कनेक्टिंग विद अस। वेरी इंपॉर्टेंटली ये कि वी आर एडिंग ऑन लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ GTA। अगर आप पिकरिंग एजैक्स में रहते हैं, वी वांट टू ऐड यू देयर। अगर आप ओकविल में रहते हैं, बर्लिंगटन का एरिया है, सिमिलरली इन ऑल द विसिनिटीज़ ऑफ GTA we are expanding, and we would like that you can get in touch with us, send us your resume, call us after the shows, you have our numbers, and we like you to be a part of us and expand with us as a Voice of Toronto TV, because we are your voice and we are your city. So a city with the voice, this is what we want to have, and we want you to be a part of that as well. तो आप हमारा सोशल मीडिया पे जो फ्लायर है आप देख रहे हैं उसको, कीप ऑन सेंडिंग अस योर रेज्यूमेज एंड कनेक्टिंग विद अस, और फीडबैक बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि दिस इज़ हाउ वी कैन गेट बेटर, ब्रिंग यू मोर शोज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू सी। उसके लिए voiceofTorontoTV@gmail.com, that's the email you need to write back to us for with your feedback and with your suggestions. You like the show, you don't like the show, what would you like to see in the show? बड़ा important ये रहता है that we need to have that feedback from your end. तो हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं संदीप साहब से, I can take that, that's okay, और उनसे हम बात करते हैं। मैं as a family we had visited his restaurant and we enjoyed the food so much. Because we found that there was a lot of, first of all, it was a halal food. That's what I was told. That's a great thing for our community, especially Pakistani community, who would like to go and visit a Indian restaurant for 100% halal food. That's the first thing. But the other thing that I found was a very warmth feeling from the staff when we walked in. And the thirdly, himself, Mr. Sandeep, when we met him, and the food itself was amazing. Service was great. So I strongly recommend, अगर आपकी कोई फंक्शन आ रहा है, आपकी कोई पार्टी आ रही है, you have some anniversary coming, कोई किटी पार्टी है, अगर even though if you have like 30, 40, 50 people getting together, कोई निकाह की सेरेमनी है हमारी कम्युनिटी ख़ास तौर पे, you get in touch with them. Their numbers and all that information will be on our screen. We would keep on sharing it during this transmission so you can understand what they have, who they are, where they are, and you get in touch with them. So it is a blessing for me that I have himself, Mr. Sandeep, with us tonight, and we will talk to him now, inshallah. Sir, ये बताएं सबसे पहले कि ये hospitality industry जिसमें आप हैं, this is a family business or this is something of आपकी ये invention है into the food business? देखिए, मैं अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मेरे फादर ही वाज अ वेरी बिग राइटर जर्नलिस्ट, अच्छा, इन हिंदी इन इंडिया। ओके, हिज नेम वाज डॉक्टर महीप सिंह, सो ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर इन हिंदी, एंड ही इक्वली उतना ही अच्छा वो पंजाबी में भी लिखते थे और सारे न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल छपते थे। तो ये हमारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस 2000 में मैंने खुद शुरू किया था। अच्छा, क्योंकि मुझे खुद पैशन था खाना बनाने का। ओके, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है खाना बनाने का वही चला सकता है। थे? Did you have proper training? I got proper training. A lot of people to know ना that you are a chef yourself. I'm a chef and proper training मेरे पास है, और ये वही लोग चला सकते हैं जिनको खुद खाना बनाना आता है। ठीक है। देखिए, ये सन 2000 में मैंने ये पहला रेस्टोरेंट अपना दिल्ली में शुरू किया था, करीज एंड मोर के नाम से। अच्छा, वो आज भी चल रहा है। अच्छा, मैं 2016 में कनाडा आया। अच्छा, तो फिर मैंने उसकी ब्रांच यहाँ मिसागा माल्टन में खोली, करीज एंड मोर के नाम से। अच्छा, ठीक। और इस साल ही मैंने ये हेरिटेज इंडिया नाम से एक रेस्टोरेंट जो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट, ये जो नाम है बड़ा यूनिक सा, हेरिटेज इंडिया,
तो ये नाम कहाँ से क्लिक किया? जी, मैं इसकी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी आपको बताना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग है जी जी ये अपने आप में एक हेरिटेज बिल्डिंग है। 1925 में इसको बनाया गया था। सी वॉल्टर करके एक शख्स थे इटालियन। अच्छा। वो तब ये जो ब्रैम्पटन है ये बस रहा था। अच्छा। उसने ये बिल्डिंग बनाई और काम शुरू किया फ्लावर्स का। अच्छा, इसी बिल्डिंग में। आई सी। और तभी ब्रैम्पटन को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ओह रियली? ही वाज द मैन, ही वाज द पायनियर। या ही वाज द पायनियर। अच्छा। तो उसके बाद में ये फिर एक दो बार बिकी, फिर इसमें इटालियन रेस्टोरेंट्स आए। अच्छा। और पिछले 25 साल से ये इसमें इटालियन रेस्टोरेंट। अच्छा। तो जब मैंने लिया तो इसको मैंने कन्वर्ट किया इंडियन कुजीन में। अच्छा। तो जब मैंने ये जगह ली तो मुझे लगा कि नहीं, इस जगह का नाम जो है वो करीज एंड मोर नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो वाइब्स हैं वो डिफरेंट है और एक हेरिटेज बिल्डिंग होने के साथ में तो अब मैंने इसका नाम हेरिटेज इंडिया रखा। ओके। सो दैट इज ये स्टोरी है हेरिटेज इंडिया नाम रखने के पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, ख़ासतौर पे GTA के अंदर, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, हर जगह। सो व्हेन पीपल आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यू, कमिंग टू हेरिटेज इंडिया, तो बीइंग अ शेफ तो आप हैं, यू नो, यू हैव दैट एक्सपर्टीज टू जो आपकी डिशेस हैं उसको यू नो यू मेक इट मोर स्पेशल। एंड बट आर देयर एनी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स or masalas that you are using which other people are not using to make you distinctive from them? देखिए, ये जो लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग होममेड मसाले बनाते हैं और ये करते हैं, वो सब फेक। अच्छा। I tell you, अच्छा। 3 चीज़ें रेस्टोरेंट लाइन में होनी चाहिए जिस करके रेस्टोरेंट आपका कामयाब होगा। Okay. पहली है उसका एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा है उसका खाना अच्छा होना चाहिए, और तीसरा उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। Absolutely. खाना अच्छा है, सर्विस बेकार है, तो भी आपका फायदा नहीं है। और अगर आपकी एम्बियंस बेकार है, आप फील कंफर्टेबल नहीं है अपनी फैमिली के साथ, तो कि जितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो वो आप नहीं चलेगा। सो ये 3 चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद जो आपका जायका है खाने का वो मेंटेन रहना चाहिए। वो एक बार ही आप आए खाना और आप 1 साल बाद भी आए तो वो टेस्ट वही मिलना चाहिए। होता क्या है कि रेस्टोरेंट लाइन में कोई भी कुक जो है या शेफ है वो टिकता नहीं है, चेंज होते रहते हैं। तो हर शेफ का अपना टेस्ट होता है। वेरी राइट। तो वो टेस्ट जो है वो ही रहना चाहिए। वो उसकी जिम्मेवारी किस पे? हम पे। राइट। जो हम लोग उसको देख रहे हैं। तो वो क्या है कि अगर वो टेस्ट लगातार वही रहेगा सालों साल, तब वो कामयाब है। अदरवाइज ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो दिल्ली का नाम लेकर के यहाँ चल रहे हैं, पर मुझे पता है वो कितने कामयाब है और क्या। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि जब आपके यहाँ फूड बन रहा होता है, हाँ, तो आप उसकी एक्टिव सुपरविजन भी करते हैं? चले, हमारे साथ एक कॉल है, हम एक कॉलर को ले लेते हैं। जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। जी, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन टू आवर लाइव ट्रांसमिशन। और आपका क्वेश्चन किसके लिए है? संदीप जी के लिए या आदिल जी के लिए? संदीप जी के लिए जी जी, बताइए। बड़ी अच्छी बातें सुन रही थी मैं, तो मैं पूछना चाह रही थी कि इनके कैपेसिटी कितनी है और कितने गेस्ट, लाइक कुछ हॉल टाइप भी है जिसमें मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं अराउंड 100 to 200 पीपल? देखिए, हमारे पास 3 हॉल्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर 15 से लेकर के 50-60 लोगों की कैपेसिटी के वो हैं। पर जो मेरा बाहर पैटियो है उसमें मैं मैक्सिमम 80 लोगों को एकोमोडेट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा अभी बार कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, तो इनके यहाँ मतलब बाहर पैटियो भी है और पार्किंग भी बहुत है, तो 80 लोग बाहर बैठ सकते हैं और अराउंड 60 आपने बताया कि वो अंदर बैठ सकते हैं। ये सिर्फ जो पार्टी हॉल्स हैं, ये पार्टी हमारे जो डाइनिंग एरिया है वो वहाँ पे भी 80 लोग बैठ सकते हैं। तो उसमें जो फिर रेट्स वगैरह जो है वो हम इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो पता चलेगी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमारी अगर आप ट्रांसमिशन देख रही हैं
तो इनका अभी फ्लायर्स और इनके नंबर सारे हमारे उसके ऊपर आ रहे हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिए। और आपकी कोई भी पार्टी हो, घर में कोई इवेंट होने जा रहा है, फैमिली में कोई निकाह है और किसी किस्म का कोई भी फंक्शन है, तो ये आप बिल्कुल यहाँ पर इनको कांटेक्ट करके, और अगर आप वॉइस ऑफ टोरंटो का सर खास तौर पे वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी का अगर आप हवाला दें तो उसके अंदर क्या रिबेट मिल सकता है, ये मिलेगा डेफिनेटली डिस्काउंट। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंजुम मलिक साहब, और थैंक यू मिस्टर संदीप, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द रेट्स एंड एवरीथिंग एंड विल लेट यू नो, विल कॉल यू। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर द कॉल जी, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय। चलिए जी, ये हमारे साथ एक कॉलर थी, नाम हमने नहीं पूछा उनसे, बट दैट्स ओके, एनोनिमस ही रहने दें। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ आदिल बैठे हैं यहाँ, a police officer running for a good position which is a council position to serve you more better। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो इनके लिए तो आप हमारे स्टूडियोज़ की लाइन खोलिए, गिव अस अ कॉल एट 9056704114। और संदीप साहब के लिए अगर कोई सवाल हो तो तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अच्छा मैं इन्हीं की जो कॉलर ने अभी क्वेश्चन किया आपसे, लेट मी कम बैक टू दैट क्वेश्चन। तो आपने बताया 80 लोग बाहर बैठ सकते हैं, 60 अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन डाइनिंग फैसिलिटी में डाइनिंग में भी हमारे पास 2 हॉल्स हैं जिसके अंदर टोटल कैपेसिटी 80 पीपल्स की। तो 80 + 60 या 80 + 60 + 80 + 80 तो बहुत काफ़ी बड़ी जगह बन जाती है। जी जी जी। तो लेकिन मतलब उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही जो पार्टी है वो आपसे बाहर भी ले लें और अंदर भी ले लें एट द सेम टाइम बुक कर लें। क्या है कि लोग जैसे कोई हॉल बुक करा लिया तो वो फिर उसी में रहते हैं, या अच्छा। आप पैटियो में करना चाहें तो आप पैटियो में कर लिए, तो ऐसा बहुत कम होता है कि लोग पैटियो भी ले लें और हॉल्स भी ले लें, अच्छा। क्योंकि फिर वो गेस्ट डिवाइड हो जाते हैं। राइट। तो अच्छा, एक ही तो आपके यहाँ जब ये पार्टीज होती हैं जी, तो पार्टीज में आप बफे सिस्टम रखते हैं या अला कार्ट होता है? ये भी वो डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर लोग बफे सिस्टम पसंद करते हैं। ठीक है। और वो स्नैक्स के साथ में फिर खाना मेन कोर्स वो लग जाता है, और हमारे सर्वर्स वहाँ रहते हैं जी, उनको। तो आपकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं हेरिटेज इंडिया को? आज अगर हम हमारे लोग जो आपको देख रहे हैं जी और कहते हैं जी हमें यहाँ हमने ट्राई नहीं किया, खाना खाया हमने कुछ नहीं, वी वांट टू डू अ पार्टी हियर और यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ इवेंट, तो व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? देखिए, हमारी स्पेशलिटी पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली, अच्छा। पुरानी दिल्ली की जो स्पेशलिटीज़ है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो आपके यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों जी हैं? जी ठीक है, नॉन वेज और वेज दोनों। और क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं दिल्ली से, ठीक है, तो हमें पता है कि वो क्या जायका है पुरानी दिल्ली का, और हम उसको मैक्सिमम वो यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप एज ए शेफ जो हैं, जब आपके यहाँ ये खाना बन रहा होता है, तो मेरा क्वेश्चन उसको जेहन में आया था, मैं जब आपसे पूछना चाह रहा, तो इंडिविजुअली आप उसको मॉनिटर करते हैं किचन में जाकर? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे यहाँ कम से कम 6 शेफ हैं। अच्छा। और वो बनाते तो वो है, पर मैं मेरी निगरानी में वो बनाते हैं, और मैं उसको टेस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं खाना अपने हिसाब से बनवाता हूँ, उनके हिसाब से नहीं बनाता। ठीक, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में एक बड़ा अलमिया रहता है, मैं उर्दू का लफ्ज़ ये बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी जो है ना, हाँ, वो प्रॉपर्ली सर्व नहीं होती जो आपका फूड है उसके अंदर। तो आपके यहाँ जब डिशेस सर्व होती हैं तो उसकी क्वांटिटी भी जो है वो भी एम्पल होती है? मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ आए थे। जी जी। और आपने खाना भी खाया, बिल्कुल खाया, और क्वांटिटी भी देखी। बिल्कुल देखी। तो निश्चिंत रहें, क्वांटिटी हमारी थोड़े से प्राइस हमारे ज़्यादा है, अच्छा, पर उस हिसाब से क्वांटिटी भी ज़्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा। तो आज तक मुझे ये शिकायत नहीं मिली कि हमने कोई चीज़ मंगाई है वो कम पड़ गई है। वो मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग बचा छोड़ देते हैं, हम उनको पैक करके साथ में देते हैं, सो दैट कि वो वेस्ट। ये ऑपरेशन आपने कब शुरू किया हेरिटेज इंडिया का? हेरिटेज इंडिया मुझे खोले इस मार्च में, इस साल मार्च में मैंने इसको ओपन किया था, तो आज कुछ 7-8 महीने हो गए। अच्छा, आपने कभी इस हवाले से भी सोचा है कि आप खुद एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड फैमिली से हैं कि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा म्यूजिक जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए? देखिए, म्यूजिक तो ऑलरेडी वहाँ है। अच्छा। और मैं हेरिटेज इंडिया को एक रेस्टोरेंट नहीं, मैं इसको एक लिटरेचर का हब बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। वहाँ मैंने जो मेरा एक हॉल है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ लिटरेरी लोगों के लिए, चाहे वो
लेखक हों, जर्नलिस्ट हों, राइटर्स हों, थिएटर एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, टेक्नीशियंस हों, उनके लिए वो स्पेस मैं डेडिकेट करना जा रहा हूँ। वहाँ पर चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उन सारे लिटरेरी लोगों को और ऐसे जो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है, मैं उनको इनवाइट करूँगा और वो आएँ, अपना वहाँ पर डिस्कशन करें, अपने काम के बारे में बताएं, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, जो आजकल वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें वो बैठ के डिस्कस करें। और एक ऐसा, क्योंकि इन लोगों के पास जगह नहीं है, कोई टिम हॉर्टन्स में बैठा हुआ है, कोई मैकडोनल्ड्स में बैठा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हेरिटेज इंडिया आइए, यहाँ बैठकर अपने काम को डिस्कस करिए, शेयर करिए, और आपकी सारी फैसिलिटी, आपको वो सुकून, वो आपको जगह हेरिटेज इंडिया देगा। So it's just like a जर्नलिस्ट की बैठक जिसको आप कह सकते हैं। बैठक। और इसका हमने छोटा सा एक नाम रखा है, चाय और चर्चा। चाय और चर्चा, not bad, good name। और आप आइए, अपनी बैठ के वहाँ चर्चा कीजिए। वेरी गुड। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन आज फ्राइडे को, और सितंबर आज 9 है, और संदीप हमारे साथ हैं और हमारे साथ आदिल हैं। और हम एक काम करते हैं कि हम एक सिर्फ 2 मिनट के एक ब्रेक पे जाते हैं, बिकॉज हमारे पास आदिल के मैसेजेस भी हैं, वीडियोस हैं। वी लाइक टू शेयर दैट विद यू, ताकि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से इस मैसेजेस should come out to you very clear and concise when you are going to vote on October 24th। लेकिन उनसे आगे चल के और बहुत सारी बातें करेंगे, और संदीप साहब से भी बातें करेंगे। Do not change this channel, we'll come back to you in about 2 minutes of time, and we'll come back to you with a lot more to come. I tell you honestly, there's a lot more information to come, and we'll share that with you very soon. Stay with us, we'll come back. Thank you. Hi, I'm Adil Kalki, your town councillor candidate for Ward 3 here in Milton. I've lived in Milton for over a decade. I went to school here, I've worked here, and I spent countless hours volunteering here. By way of profession, I'm a police officer. I know about the hard work it takes to serve the community and be committed to public service. This community has a special place in my heart, and I believe that this community deserves the best kind of leadership we can get. The future of Milton depends on new, progressive young people to take on leadership roles, to tackle challenges that come with a municipality that's growing as quickly as Milton is. The residents of Milton are unique. We look after each other and we help each other out. The concept of being good neighbors is what defines Milton, and I believe that council deserves that same style of leadership. I will always strive to be the best advocate I can be and put your concerns first when making decisions. Milton faces a number of challenges. Council has responsibility to find real solutions to real problems. I want to be part of that process. I'm proud to announce and speak about my priorities that I will address if I'm elected to council this October. Challenges such as road safety, making street parking more lenient, increasing funding for municipal services, and increasing public engagement and consultation between the public and members of your next council. With your support, I know that we can work together to create a better Milton for everyone. Let's get this done, Milton. Progress starts now. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors.
Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. वेलकम बैक व्यूअर्स फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक और आप ये प्रोग्राम देखते हैं एवरी फ्राइडे को। और आज हमारे साथ हैं संदीप सिंह साहब जो कि हेरिटेज इंडिया के मालिक हैं, और आदिल हमारे साथ हैं जो कि वार्ड 3 के कंटेस्टेंट हैं, कैंडिडेट हैं फॉर द म्यूनसिपल इलेक्शंस कमिंग ऑन October 24th। जैसे आपको इल्म है कि पिछली भी ट्रांसमिशन में हमने जिक्र किया था कि ख़ास तौर पे वसीम बदामी यहाँ आए हुए थे और बहुत सारी फंड रेजिंग भी हुई यहाँ पर पाकिस्तान फ्लड्स के हवाले से। और मुस्लिम वेलफेयर कनाडा इसके अंदर बहुत काम कर रहा है। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये बात जिक्र किया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी। और इकबाल साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अनुम साहब, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम वेलफेयर का। चलिए कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे सर, नो वरीज। ये फरमाइएगा सबसे पहले कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के ऊपर जो आपकी काविशें हैं वो बहुत हैं माशाल्लाह, हम देख रहे हैं। उस हवाले से कुछ शिपमेंट्स आपने भिजवाई हैं पाकिस्तान, थोड़ा सा उस पर वजाहत कर दें। और इससे अलावा जो अब लोग जो हैं अगर वो आपको डोनेट करना चाहें तो उसका प्रोसीजर आपने क्या रखा है, कहाँ जाकर डोनेट करें, और थोड़े से जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। ज़रूर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो ये पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के हवाले से जो हमारा इमीडिएट काम इस वक्त हो रहा है वो इनिशिएटिव है इनका आरिफा मुजफ्फर साहिबा का। अच्छा, ये आवाज़ का आवाज़ वालों का, तो उसको हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त हमने उसी के थ्रू कई जो है ना फूड पैकेजेस 500 से 800 तक फूड पैकेजेस इमीडिएटली भिजवा दिए हैं जो से एयरलिफ्ट और PIA से इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमारा अपना इनिशिएटिव है वो भी हमारी PIA से अरेंजमेंट हो गया है। और हम वो फूड उसके अलावा फूड और इमरजेंसी किट्स पैक कर रहे हैं। इस वक्त कई हज़ार पैक हो रही हैं और इंशाल्लाह ये भी जल्द अगले हफ्ते से वो अलग जाना शुरू हो जाएगा इमीडिएट हेल्प के लिए। उसमें जो है नॉन पेरिशेबल फूड है ज़्यादातर जो पैकेट में है, तकरीबन $20 से $30 का उसमें खाने की चीज़ें हैं। चावल है, दाल है, चीनी और नमक वगैरह है। और इमरजेंसी किट में वाटर प्यूरिफिकेशन है किट है, उसके साथ ये सोलर लाइट है और 4-5 और चीज़ें। ये हमें एक्चुअली हमारा यहाँ कोलैबोरेशन ग्लोबल मेडिक के साथ भी होता है। तो ये ग्लोबल मेडिक ने हमें जो है डोनेट किया है कि ये पाकिस्तान हम फॉरवर्ड कर दें। तो वो इस वक्त तकरीबन 1900 या 1000 हैं पैकेजेस। ये भी अच्छे बड़े डिब्बे हैं और सिंपल, इसमें बिल्कुल फिल्ट्रेशन का सिस्टम है कि डायरेक्ट आप जो गदला पानी है, सैलाब का पानी है, उसको डायरेक्ट आप जो है फिल्टर कर सकते हैं एक बकेट से दूसरी बकेट में। और वो बिल्कुल इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का अप्रूव है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा हमारा जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान में ही है, क्योंकि हमारा काम पाकिस्तान में भी होता है, हमारे वहाँ ब्रांच है। तो वो वहीं से खाने की चीजें अशिया खरीद के पिछले 4-5 हफ्तों से वो खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नॉन पेरिशेबल। सबसे पहले तो सिंध से ही शुरू हुआ था क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल खराब थी, तो वो अब भी हो रहा है। और अब जो है वो टेंट्स, कई हज़ार टेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए। और उसके साथ साथ ये मच्छरदानियाँ, क्योंकि वो वहाँ में डेंगू फीवर भी पानी की वजह से, गंदगी की वजह से बहुत फैल रहा है। जी। तो मच्छरदानियाँ और ये टेंट्स
भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि ग्राउंड ज़ीरो पे पाकिस्तान में आपकी जो टीमें काम कर रही हैं, जी उनको यहाँ से आई मीन आपका जो एक अपना तरीकाकार है जिस तरीके से आप चीज़ें भेज रहे हैं, कार्गो के थ्रू चीज़ें जा रही हैं, लेकिन जो डोनेशन लोग करना चाहते हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा को, उसका कोई आसान तरीकाकार बताइए कि यहाँ से कनाडा से लोग आपको डोनेट कैसे करें ताकि वो जो रकम है वो पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ से जो आपके लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो वहाँ से वो चीज़ें ख़रीद के जो हैं फ्लड जो विक्टम्स हैं और जो अफेक्टीज़ हैं उन तक पहुँचाई जाएँ। बेशक यहाँ से जो हम इसलिए भेज रहे हैं कि PIA अल्हम्दुलिल्लाह PIA ने हमें ऑफर किया है कि वो फ्री एयरलिफ्ट करेंगे, तो इसलिए वो सूट करता है यहाँ से भेजना। मगर हम वहाँ पे लोकली ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोकल इनिशिएटिव में, क्योंकि वो आप वहीं लोकल मार्केट से खरीद के आप तकसीम कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ से फंड रेज कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे जाएं या हमें फ़ोन करें, आप यू कैन डोनेट वेरी इजीली। वो पाकिस्तान फ्लड रिलीफ उसमें आपको आइकॉन नजर आएगा, उसमें आप डोनेट कर सकते हैं कैश। आपकी जो वेबसाइट है mwcanada.org, उसी पे ये लिंक अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है mwcanada.com। तो मैं अपने 416-754-8116 ये फोन नंबर है जी, और एक टोल फ्री नंबर भी है जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। इस वक्त मुझे नहीं, वो हमारे पास चल रहा है सर वो आपका नंबर। तो मैं रीइटरेट कर दूं एक दो चीज़ें हमारे व्यूअर्स के लिए कि इकबाल साहब हमारे साथ हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के। यहाँ से शिपमेंट्स तो जा रही हैं, लेकिन अगर आप इनको डोनेट करना चाहते हैं, कोई फंड्स पैसे जो हैं किसी भी तरीके से, तो इनकी जो वेबसाइट है mwcanada.org पे जाके आप होल हार्टेडली इनको सपोर्ट करें। पाकिस्तान में इस वक्त मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, over 33 million people, the numbers I have are displaced, and over almost 1500-1600 लोग जो हैं वो इसमें अपनी जानें भी गंवा चुके हैं इस फ्लड के अंदर। और the need of the time is that we all should support this noble cause, और उस हवाले से आप जितना भी डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ करें। और ये भी बताइएगा कि जो आपके वहाँ पर इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो कौन से प्रोजेक्ट हैं और किस तरह उनको सपोर्ट किया जा सकता है इकबाल साहब? बेशक मैं बताता हूँ। उससे पहले जैसे ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ भी आप नॉन पेरिशेबल फूड डोनेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये चूँकि हम भेज रहे हैं और PIA का इस वक्त ओपन है अंटिल फर्दर नोटिस, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप चाह रहे हैं कि आटा नहीं ले रहे बल्कि आटा लोकली अवेलेबल है, चावल, दालें, चीनी, पत्ती और पाउडर्ड मिल्क, ये सब चीज़ें आप यहाँ इन काइंड भी यानी इलाके में डोनेट कर सकते हैं और हम वो पैक करके भेज देंगे। लेकिन बेस्ट तो यही है कि अगर आप कैश डोनेट करते हैं तो उसमें हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि हम एक ही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का सामान बल्क में लेते हैं, सस्ता पड़ता है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू डोनेट इन काइंड एज वेल। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया हमारे ये फ्लड रिलीफ का प्रोग्राम तो इस वक्त है घोड़ों पे। इसके अलावा हमारे वहाँ सपोर्ट अ चाइल्ड का प्रोग्राम है। तकरीबन 450 बच्चे जो हैं इस वक्त यहाँ से स्पॉन्सर्ड $1 डे के हिसाब से। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे मुल्कों में लिटरेसी रेट जो है उसको बेहतर करने के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती संदीप साहब, कि आप यहाँ से एक फैमिली में अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई अगर आप उनको सपोर्ट कर दें और वो बच्चे कल को पढ़ के जो हैं कोई डिप्टी कमिश्नर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो वो पूरी आपकी पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव है आपका ये इकबाल साहब। और ये कितना $1 ये $30 अ मंथ है, ये कितना है ये? जी $30 मंथ है, 360 पर ईयर है। 360 एक बच्चे को आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कौन सा बच्चा है, किस क्लास में है, और फिर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है ना वो साल में 2 मरतबा आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आएंगे, बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है पढ़ाई में। और ये ना सिर्फ बच्चे को सपोर्ट करते हैं $1 पर डे के हिसाब से, बल्कि बच्चे के एक तो वो पूरी किताबें, टीचिंग और उसके यूनिफॉर्म और शूज, उसके अलावा उनकी फैमिलीज को भी जो है ना वो हमारा फूड बैंक है जिससे उनको ये नॉन पेरिशेबल फूड मुहैया किया जाता है, ताकि
उनके पास इंसेंटिव हो कि बच्चे को स्कूल से ना निकालने काम कराने के लिए, तो मजबूर हैं वो लोग भी। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी फैमिली को सपोर्ट ना प्रोवाइड करें कि वो बच्चे को रहने दें स्कूल में पढ़ने के लिए। और यही आपने जैसे कहा कि ये पाकिस्तान के लिए जो बुनियादी चीज़ है इस वक्त, जिससे पाकिस्तान इंशाल्लाह आइंदा सालों में तरक्की कर पाएगा सही मानों में, वो तालीम पूरी तरह से, यानी गरीबों, ख़ास तौर पे गरीबों में, जहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे बेचारे गैर तालीम याफ्ता रह जाते हैं, जी उनकी मदद करना एक प्रोग्राम है। दूसरा हमारा जो है मेजर वो वाटर एक्सप्लोरेशन का है। वहाँ हम कुएं खुदवाते हैं और ट्यूबवेल्स नस्ब करवाते हैं इंटीरियर सिंध में और पंजाब में और कुछ बलूचिस्तान में भी और कुछ खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये जो है सिंध में ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि वो बहुत बड़ा जो रेगिस्तान है थर, उसमें इंटीरियर में बहुत पानी की किल्लत है और बड़ी मुश्किलात हैं। तो वहाँ पे हम इंटीरियर में जाके ये कुएं खुदवाते हैं। तो एक कुआं जो है वो तकरीबन $2000 लगते हैं उसको खुदवाने में, और वो तकरीबन 2 महीने तकरीबन लगते हैं उसको कंप्लीट होने में, क्योंकि वो हाथ से खोदना पड़ता है, क्योंकि इतने रिमोट एरिया है वहाँ मशीनें नहीं जाती हैं अक्सर। सर अभी तो वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, तो अब जाहिर है तो आपको तो पता ही है कि उस सैलाब में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती फिलहाल। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आपने पूछा कि प्रोग्राम्स वहाँ पे क्या है, तो जो रेगुलर हमारे कई सालों से प्रोग्राम हैं, तो और फिर हम जो भी एक करवाते हैं कुआं या ट्यूबवेल, उस पर हम वो एक तख्ती लगवा देते हैं मार्बल की, जिसपे के डोनर का नाम होता है और मिसाल सवाब के लिए दुआ की दरख्वास्त होती है, और फिर वही और तख्ती पे एग्जैक्ट लोकेशन होती है, पिन GPS से पिन ड्रॉप करके क्या लोकेशन है, वही इंफॉर्मेशन हम उस तख्ती की पिक्चर भी और अच्छा वो GPS ट्रैकिंग के साथ, ठीक है, डोनर को भी भेज देते हैं ताकि वो अगर चाहे तो एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जाके देख भी सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक 2500 से ज्यादा जो है कुएं और ट्यूबवेल नस्ब हो चुके हैं। और इस तरह के वो फूड के प्रोग्राम है, फ्री क्लिनिक्स हैं वहाँ, तो हमारी फूड बैंक्स हैं 2 स्कूलों के साथ। और बाकी ये कि सिंध में ये प्रोग्राम है ये थर के इलाकों में, गरीब इलाकों में, जहाँ पे कि जो मदर एंड चाइल्ड केयर हम कहते हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा होने वाला होता है, वो वैसी ख़वातीन को उस प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर्स रजिस्टर करते हैं और उनको ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी ग़िज़ाइयत जो है और दवाइयाँ जो ज़रूरी हैं वो उनको मिलें, ताकि जो डिलीवरी है वो एक सेफ इन्वायरमेंट में हो सके। और ज़्यादातर जो कोशिश करते हैं किसी अस्पताल में हो जाए, छोटे अस्पताल ही सही, या किसी नर्स की प्रेजेंस में हो जाए कि बच्चे को बचने के चांसेस मैक्सिमम हो। चलें तो सर एक जी बहुत शुक्रिया इकबाल भाई बहुत सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने का। तो हमारे व्यूअर्स जो आपको सुन रहे हैं, तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं mwcanada.org उनकी वेबसाइट पर जाके आप पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के लिए भी डोनेट कर सकते हैं, इनके जो बाकी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भी डोनेट कर सकते हैं। आपसे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बात करते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये थे हमारे साथ इकबाल साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के। और आप दिल खोल के अतियात दीजिए प्लीज़, पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी इस वक्त बहुत संगीन है और आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। तो प्लीज़ ओपन हार्टेडली यू कैन डोनेट टू मुस्लिम वेलफेयर कनाडा। और जो भी चैरिटी आप समझते हैं जिसके लिए आप भेजना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट, बट कोशिश ज़रूर करें। कमिंग बैक टू आवर गेस्ट टुनाइट, हमारे साथ आदिल हैं और संदीप साहब हैं। आदिल, लेट्स टॉक टू यू, वी नीड टू स्पीक टू यू लिटिल बिट मोर ऑन योर एफर्ट्स in the Milton area. So, do you feel any challenges running as a Pakistani or somebody with a color, in that society to run as a councillor? Do you feel that obstacle when you are going and talking to people and knocking the doors? What do people tell you? So, first of all, I'm a proud supporter and promoter of diversity, equity, and inclusion, and I feel like my diversity adds value to the decision-making process if people that not only look like
what I look like, yeah. But have that different cultural experience that they can bring to the table and help make the best possible decision ever. No, I don't see it as an obstacle, because okay. I strongly believe that the people of Milton, and whenever people are deciding to vote, they vote for people based on their merits and what they've done and the case that they're bringing to the table and what they're proposing to the voter if they get elected. Okay. So do you think that all this background that you have from the policing perspective, is that helping you in this campaign? 100%. You know, in what way? The reason I'm running is the same reason I became a police officer. It's to, at the end of the day, go into tough situations and come up with solutions to problems and be a person who goes the extra mile, goes above and beyond to make a difference in people's lives. That's policing in a nutshell, and I feel like that's what government exists to do in people's lives as well, is to be that helping hand. It's to be a strong advocate for people and point people in the right direction and help them with the challenges that they face. So that's what I do as a police officer right now in terms of the public service I'm giving to the community, and that's the type of service that I want to extend, and that's the thought process I would be bringing to this role as well. You know, one of the questions that come to me, my mind, Sandeep's mind as well, you know, as a residents of either Brampton or Milton or wherever we live, this rise in crime, you know, in our cities, the carjackings, the killings, you know, these fights that going on, drugs, the drug issues. What do you know, you've been a police officer for a couple of years yourself now, and you've been serving. What do you think is the major cause? What is the root causes that you have came up with that, you know, if this we can change, we can eliminate this, what would that be? Well, from my experience, what I've seen is that people that we're interacting with that are engaging in these crimes tend to have tough backgrounds in terms of their childhood. They have mental health issues in many cases, and are addicted to substances or have substance use disorders, like you mentioned, drugs. That addiction, that poverty can play a huge role in a rise in crime. Those type of things, the social status of a person can play a role in that. Now, the root cause of an individual's reason as to why they're making the choices that they're making, it's very unique to them. There's no one way to put a blanket over that. What's causing people to steal, you know, because that's different for every single person. But there's things that can be correlated to that, like poverty, mental health, substance use, those type of things. And when it comes down to governments being able to facilitate the public in terms of preventing crime from happening in their neighborhoods, council does have a role to play there, right? It's about educating the public. If we have elected officials that have that diverse perspective, whether they're teachers, police officers, engineers, that experience that they would bring would transfer into the role of a counselor, a role of any politician or elected official, and that would add to the ability to make the right type of decisions and think of ways to prevent crime from happening or other issues from happening if we have that diversity there. I was so kind of engaged in the conversation with you that अगर आप viewers कोई message भेजना चाहते हैं हमारे Facebook के ऊपर, and I know people are watching us, we will try to put the question to our guest and get the answers. So you can feel free to do that. I know you guys are watching us, but if you would like to kind of exchange your sentiment with us in anything, please, our lines are open, 905-670-4114. The numbers are on the screen right now, and you can call us. Our lines are open. Another thing, what are the precautions that people need to do to prevent the break-ins in the homes and this carjacking? These are the two major important things right now that's happening. As a police officer, what would you suggest to our viewers tonight
Yeah, so there's a number of things people can do that are very easy. Like if you're in a house, leave your porch light on overnight. Install surveillance cameras on your property, because if something were to happen, that documentation would help the police further investigate the matter that happened. And keeping your property clean and properly maintained. There's something called the broken window theory. If you show that there's a care for your property, people are less likely to commit crime onto that property. So basic things like that can help. And what about carjacking? How do we prevent the carjacking? So if it happens while you're in the car, police will say, you know, we're encouraging people to make sure that you cooperate. That way you prevent further escalation, and that way you don't get hurt. That if it's happening to you while you're there. But things like overnight car thefts can be prevented by keeping your car locked, because that's a huge thing. I know that. I mean, generally there's still a lot of people who don't leave their cars generally people locked, do lock their cars, yes. and they have the new fobs and you know, everything. But still, I mean, it happened in my neighborhood. Within seconds, the car, a Land Rover, was stolen. Yep, parking your car in the garage, installing a steering wheel lock as well. Those type of things can help. Don't leave any valuables in your car. I think that's a good thing. The steering wheel locked are very important. I think with the technologies now, people can get duplicate keys and they can scan your keys and kind of like. But I think if you have the lock installed, it will be hard to cut that lock and take the car away. Right. I think we spend $40–50. That's more important to have a lock there rather than. What are the other things you think that our community should do when they're coming forward to run for elections? So they should do their research. They should be in it for the right reasons, and they need to be able to have the confidence to talk about why they believe that they would be the best person to do the job that they're trying to do. You know. They need to have strong set of merits, strong set of a track record of public service, because that's what government is all about. It's about serving the community, and you need to have that background there. So they need to be volunteering in the community that they want to represent. They need to be living in the community that they want to represent. They need to have transferable skills from past experiences that will help them build a case as to why they'll be a good representative. And then I'm strong, like I said in the beginning, diversity is very important. We need more diverse people to be putting their name forward, as long as they have those other merits with them as well. And I'm also the youngest candidate running in my ward, in Ward 3 in Milton. So how many people are running from your ward perspectively, like Ward 3, how many people are there? Yep, so there's 4 others against me, it's 5 altogether including me. There is no incumbent councillor. The current councillor in that role is running for a different seat. So the local position is open for new representation to be elected this time around, which gives it all the more reason for voters to make sure that they do their research and choose the right candidate. So for a lot of people who are watching you tonight who do not know the demographic of Ward 3, where does technically it starts and where it ends kind of a thing? So it's southeast Milton, so it's south of Derry Road and east of Regional Road 25. That's all Ward 3. Okay. And the Ward 4 they're adjacent to where Samira is? Yes, so the Regional 25 is the border of that, so the other side of that would be the west side of that would be Ward 4 up until a certain point. So tell me on your fingers, if I'll ask you this, top 3, what are your strengths, top 3 strengths to run for this seat? Top 3 strengths are going to be the fact that I'm diverse and young. The second strength would be that I am somebody who has a track record in public service. And the third one is that I set goals that are really hard to accomplish, and I never stop until I achieve those goals. And what are the 5 things you want to change in Ward 3, Milton, that you see that the previous councillors have not managed to do it, that you would like to do when you go in? I'm not going into this in the perspective of, saying that but still the previous councils haven't done the best they can. I believe that since this is a situation where there will be new representation coming in, I will be adding that new perspective in there and building on the progress that's already been made and advocating the voice of the residents that live in Ward 3 and putting their interests first when making decisions. So for me, it's not my own self-interest that are guiding me to do this. It's what the residents want from their government
my promise to them is that I will be the best advocate I can be and put their concerns first and try to get solutions to the issues that they're coming up with. Okay. Yeah. Okay. And the one more question that comes to anybody's mind would be that if you are already working as a police officer, Yep. are you legally allowed to run for a counselor as well? And can you maintain the both Yep. portfolios at the same time? Yes, absolutely. So in municipal politics, the provisions under the Police Services Act allow for a person that is a serving police officer to run in a municipal election, and even if they get elected, continue to be a police officer as long as they're not being an elected official in the municipality that they police in. So I don't work as a police officer in Milton, I work for a different municipality. Okay. So I am very much allowed and able to run while still being a police officer for municipal politics, and hopefully once elected continue to be a police officer while being a counselor. So what is those, some of those, I would say a word profound message that you have for the community tonight who are watching you and who can see you, a young talented guy like you, going for this kind of a position? What is the message that you have for them? The message I would like to send is that the future of Milton, since we're growing so quickly and we've grown so much over the past few years, the future of Milton depends on new progressive young people to be elected into positions like these, to set an example for our young people that are going to be leaders of the future, to motivate them to be engaged in these type of things and to want to have a good town to live in the future, and that the decisions that we need to make moving forward need to be bold, ambitious, and we need to be out of that mindset of we can't do this here, and we need to say yes we can, and not be afraid of taking big moves on certain issues, making mistakes and learning from those mistakes. That's my message to voters going into this. I'm not someone who's afraid of making mistakes. I'm not going to make the right decision every single time. I'd be lying if I told you I would do that, right? But what I do promise to do is any decision I make, whether it's the right or wrong decision, or if there's something that happens that isn't the best outcome, I will learn from that and continue to move forward in the right way. Okay. Well, thank you for that. I think very, very good thoughts, I would say. And it's good to see somebody who's on the streets every day who could evaluate the problems that they are facing in the society, and he or she can make that difference, has a voice in the council to bring about making some changes. So good luck with that. Thank you. Yeah, it's great. Rather than sitting in an office, Yeah. he's always on the street. Yeah, So exactly. that's going to help him. Absolutely, absolutely. I agree 100% because when you have on-hands experience, on-hands evaluation of the things, and you deal with them every day, you can always make a difference and make a, it will be very, I see when people make informed decisions like this, especially when they make a decision to run for something, you need to know your basics. You need to know where you are strong and how you can be better and how you could be better for the people that you're going to serve for. That's very important. Rather than just putting a ballot name and just going out there for elections. Coming back to you, Sandeep sir. थोड़ा सा जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी बात की थी कि द हेरिटेज इंडिया में you want to create this environment, which is a great thought, that you want to bring some minds together and you give them a platform and opportunity to come and use your facility. And so वहाँ से idea क्या है, what to achieve from those sittings that people will have, where will you go from there, like how they can be more instrumental to you when you provide them that platform, and आगे क्या plan क्या है, what do you, I mean, you have in mind as an artist, what do you want to do? अंजुम जी, ऐसा है कि आज से कुछ 20-25 साल पहले दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट में एक टी हाउस हुआ करता था. अच्छा. वो एक ऐसी जगह थी जहाँ सारे लिटरेचर के लोग, फिल्म के लोग,
सिंगर्स वहाँ आकर के बैठा करते थे और वहाँ टॉप क्रीम आया करती थी, जो अपने अपने काम के बारे में, कोई फिल्म बना रहा है तो उसकी डिस्कशन चल रही है, कोई टॉप के लेखक वो अपने बैठ के वहाँ डिस्कशन चल रहे थे। तो वो एक आइडिया मेरे दिमाग में था कि वो यहाँ पर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा एक लिटरेरी हब बने जहाँ ये सारे लोग आए, बैठें, अपने काम को डिस्कस करें, और जो नया टैलेंट है, जो लोकल हमारा टैलेंट है, इतने बढ़िया टैलेंटेड यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं जिनको कोई चांस नहीं मिलता। अगर एक कोई फिल्म मेकर बैठा हुआ है, वो अपनी फिल्म बना रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ के लोकल टैलेंट को ग्रूम करे। राइट। और यहाँ मैंने कुछ लोगों से मिला हूँ जो गज़ल सिंगर हैं, पाकिस्तानी एक लड़का, यंग लड़का, इतना बढ़िया वो उसने मुझे सुनाया अपनी गज़ल कि मैं को लगा कि यार ऐसे लोगों को तो आगे आना चाहिए। बिल्कुल। एक लड़की है जो गाइनीज है, वो तबला बजाती है, और वो जो यहाँ ब्रैम्पटन के डाउनटाउन में पार्क में बैठ करके, और उसको सुनने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। वाह। तो ऐसे टैलेंट जो हमारा लोकल है, जो हिडन टैलेंट है, वो क्यों ना आगे आए। हम आर्टिस्ट इंडिया से बुला रहे हैं, पाकिस्तान से बुला रहे हैं, क्यों बुलाए जब हमारे पास लोकली लोगों को प्रमोट नहीं। तो वो टैलेंट आगे आए, आगे लोगों को मिले। अभी 18 इस तारीख को सितंबर को हम लोग वहाँ बुक रीडिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा। कि आप आइए, अपना कोई भी आपको कहानी। we have a caller. Welcome to Voice of Toronto TV जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं महमूद बात कर रहा हूँ जी। अभी आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। जरूर सर। ऊपर बात हो रही थी, संदीप जी ने अभी वो उसके हवाले से बात की। इससे पहले कि मैं बात करूँ, सबसे पहले अंजुम साहब आपको और आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपनी हवाओं से दूर बैठ के आप लोग याद भी करते हैं और इतने जबरदस्त प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी को। और सर आप तो एक छोटी सी कोशिश करते हैं सर, बस और कुछ नहीं। नहीं, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है ये। छोटी आप लोग छोटी कोशिश कह रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के जिस वक्त ये इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं तो वो जो हमारे अंदर की माँ की ममता होती है, बाप की विपता होती है, तो कम से कम या विपता या ममता की कमी महसूस नहीं होती। राइट। तो मैं भी वो संदीप जी बात कर रहे थे कि ऐसे कैफे है उनके, हाँ, हिंदुस्तान में, जहाँ बैठ के ये करते थे, मुलाकातें होती थी, तो मुझे अपना पेशावर याद आ गया। अच्छा। खानी बाजार, जहाँ पर कावा भी होता था और फिर किस्से होते थे और फिर सारे दिन की थकन उतर जाती। राइट। और वहाँ पेशावर में ही एक था खान क्लब के नाम से एक कैफे था, कैफेटेरिया था। अच्छा। तो उसमें भी ये जितने भी यूनिवर्सिटीज के, स्कूलों के, कॉलेजेस के डीन्स होते थे वो आ जाते थे, ताजर बरादरी के लोग आ जाते थे। जो क्रीम होती थी, मतलब आप शावर की जो क्रीम होती थी, उसमें ये नहीं था कि ये पश्तो स्पीकिंग है या नॉन पश्तो स्पीकिंग है। बस जो क्रीम होती थी वो आके बैठते थे जी। और साथ में कावा भी चलता था और सारे दिन की गुफ्तगू होती थी। एक दूसरे का हाल अहवाल पता करते थे, एक दूसरे के बच्चों के हवाले से पता होता था, घर के हवाले से पता होता था, बेटियों के रिश्ते हो रहे नहीं हो रहे, यहाँ तक पता होता था जी। और डिस्कशन होती थी। आज मैं इस सिस्टम को देख रहा हूँ तो मुझे यकीन करें बड़ा दुख होता है कि हमें ये नहीं पता हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है। वेरी ट्रू। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप कौन सी एरिया में रहते हैं महमूद साहब? मैं जी बेसिकली तो शावर से हूँ और अभी यहाँ पे कनाडा में हूँ जी, मिसिसागा यहाँ पर आया हुआ हूँ। हमारे साथ एक बड़े यंग टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, आदिल साहब, और ही इज माजरत चाहता हूँ, मैं इनको नहीं वो कह सका, सॉरी, बड़ी बात। मैं एक्चुअली संदीप जी ने किस्सा ही ऐसा शुरू कर दिया मैं डायरेक्ट उस तरफ डाइवर्ट जी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और हाय कहूँगा। आदिल भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। बस मैं आपको सुन नहीं सका, मैं एक्चुअली नॉस्टैल्जिया में चला गया
अच्छा मैं नॉस्टैल्जिया में चला गया, मुझे वो याद आ गए, वो किस्से, वो कहानियां, वो अब इनका चूंकि सरदार जी का लिखा हुआ भी है कि हेरिटेज के नाम से इनका कोई रेस्टोरेंट भी है, तो डेफिनेटली मैं एक दफा वहां भी जाऊंगा। जी, हेरिटेज इंडिया, जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, वहाँ उन्होंने एनवायरनमेंट कैसे रखा है। लेकिन असल में सर जो ड्यूटी आप कर रहे हैं और ये जिस किस्म के अचीवर्स को आप लेकर आ रहे हैं ना, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द रियल जॉब, दिस इज कि जो मुझे नहीं पता था संदीप जी को मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे पड़ोसी हैं ये जिस तरह बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं माशाल्लाह। मेरी भी इनसे मुलाकात एक दफ़ा हुई तो मैंने यही मुनासिब समझा कि इनको हमारी कम्युनिटी जो है उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है कि हेरिटेज इंडिया एक तो पहला एक हलाल फूड आपको दे रहा है, ख़ुद ये शेफ़ हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्होंने जगह बनाई है और एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, अच्छा है अंदर। तो एवरीबडी शुड गो एंड ट्राई। आप भी अपनी फैमिली के साथ जाइए, वहाँ पर ट्राई कीजिए फूड जो है। नहीं जरूर जाएंगे। मैं तो बड़ा मोटिवेशन आ गई मुझे, ये अभी लाइव देख रहा था, बड़ी बात और मजे की बात क्या है जी कि ये जो आप लाइव करते हैं जी, कम से कम हमारे जैसा कोई बंदा जो बैठा होता है जिसका दिल होता है कि वो दिल की भड़ास निकाले, वो कम से कम फोन तो कर लेता है, वेरी राइट, बात हो जाती है आपके साथ। तो आपके टीवी की विसादत से मैं ये जितने सुनने वाले देखने वाले हैं सबको मैं यही कहूंगा कि हमें मोटिवेट करना चाहिए जी, और ऐसे टीवी चैनल्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि जो कम वसाइल के बीच में रहकर बहुत बड़ी ड्यूटियां कर रहे हैं। और आदिल साहब और सरदार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आए, और आपका तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपके सेंटिमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपने एक माहौल बना दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल का सर, बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा मजा है, आपको नहीं पता, मैंने इधर कमरे में ये हेल्थ की बात हुई तो मैंने बीवी को कहा जल्दी ना कावा बना के ले आ, कावा ले आ, किशोरी कावा। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये असल में क्या है कि हमारे जो कॉलर्स हैं और जब वो आप जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो इट ब्रिंग बैक मेमोरीज, यू नो, यस्टर ईयर्स, यू नो। जब हम लोगों का पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कल्चर तो वही है ना, बिल्कुल लोगों की रग रग में वो चीज़। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जी। हेलो जी, आपने तो हमें पेशावर, लाहौर और सबकी याद दिला दी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम आपका देख रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोनों गेस्ट को मेरी तरफ से बहुत हाय सलाम जी। सत्श्रीकाल। आपका कोई सवाल है संदीप जी के लिए, किसी के लिए? हेरिटेज इंडिया हम जरूर जाएंगे, जिस तरह का नाम है तो वहाँ जाना तो बहुत जरूरी अब बनता है। जी जी तो जरूर जाएंगे। और सबसे पहले कि हलाल फूड है तो ये तो आपको खाने में क्या पसंद है जी? हेलो, आपको खाने में क्या पसंद है? हेलो, मैंने कहा आपको खाने में क्या पसंद है? अच्छा, कॉल कट गई उनकी, सॉरी सॉरी। आप संदीप जी कुछ कह रहे थे? मैं बता रहा था कि इस 18 सितंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं और वो पहला हम लोग जो प्रोग्राम रखा है वह बुक रीडिंग का है। अच्छा। तो जो भी लोग वहाँ आएंगे अपनी कोई उपन्यास, कोई कहानी उसको वहाँ दोहराएंगे, पढ़ेंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी या डिस्कशन होगी। अच्छा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट थिंग, वी आर गोना स्टार्ट इट, एंड फिर इससे आगे फिर वो और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले कि रैप अप करूं और कुछ 2-3 मैसेजेस आपकी समातों की नज़र करूं, बड़ा इम्पॉर्टेंटली हम ये भी चाहते हैं कि जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आप ये लाइंस आपके लिए खुली रखते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दोबारा कॉल आ रही है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जी। जी वालेकुम सलाम, मैंने कॉल किया था, पता नहीं कट गई कॉल। जी 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 हेलो कहा था। हाँ, आपसे ये पूछा गया था कि आपको क्या चीज़ पसंद है खाने में? खाने में जाहिर है कि इनके पास जो मेन्यू होगा वो बहुत अच्छा होगा जी। अभी ट्राई करना है हमने जाकर, क्योंकि नाम सुना है तो बस जरूर, और हलाल फूड है तो हम जाएंगे जरूर, ट्राई जरूर करेंगे। और मैं खुद शायरा हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि हेरिटेज इंडिया में
शायर भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आपका हक तो सबसे पहले बनता है। बिल्कुल, क्योंकि जब सुनते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना टैलेंट लेकर जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। जी, मैं आपको इनवाइट करूंगा। इस 18 तारीख को हम लोग वहाँ बुक रीडिंग कर रहे हैं, आप आइए, अपनी तो कुछ शायरी हमें सुनाए। तो पढ़ते ही नहीं लोग जब से हाथ में फोन यही है, तो इसीलिए ये चीज़ जो बहुत हमारे कल्चर में कम हो गई है, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये रेडियो तो नहीं, खैर जो ये मोबाइल फोन ने आकर के हमारा जो पढ़ने लिखने का कल्चर था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो चीज़ दोबारा वापस आए, लोग पढ़ना शुरू करें और एक लाइब्रेरी में जाना शुरू करें। और अगर आप शायरा हैं तो प्लीज आए, अपनी एक कुछ अच्छी शायरी हमें सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, कोई जाते जाते कोई शेर आपकी अगर उसमें हो, आपकी वोकैबुलरी में, तो सुनाते जाइए। संदीप साहब बैठे हैं, अगर कोई आमद हो रही है आपको शेर की। आमद एकदम दिमाग जो है ना हेरिटेज इंडिया में गया हुआ है। अच्छा चले, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो आदिल साहब को भी हमारा बहुत सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम। ऑफिसर्स को वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। सर, ये हमारे कॉलर्स की बड़ी मोहब्बत है कि वो मतलब कॉल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आपके साथ व्यूज़ जो हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम्स करने आते हैं तो आपका जो प्रोग्राम के बाद का जो फीडबैक होता है ना, वो भी बड़ा ज़रूरी है कि हमने कोई गलती की है, हमारी तस्हीह कैसे हो सकती है, हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, फर्दर ऑन कंटेंट जो है उसमें हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप हमारी तस्हीह भी कर सकते हैं, इसलिए वी आर लाइव विद यू। अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो हमारे साथ संदीप सिंह साहब हैं जो कि ऑनर हैं हेरिटेज इंडिया रेस्टोरेंट के, जो ब्रैम्पटन में एक ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट खुला है। आप उसको जाके विज़िट कीजिए, कोई पार्टी है वहाँ जाके कीजिए, और इनके नंबर्स हमारे पास स्क्रीन पे चल रहे हैं। हेरिटेज इंडिया, आप सर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है heritageIndiarestaurant.ca। heritageIndiarestaurant.ca, बड़ा ईजी है, heritageIndia.restaurant.ca। अच्छा, तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, आदिल साहब हमारे साथ हैं जो कि लड़ने जा रहे हैं काउंसिल का इलेक्शन, डिज़र्विंग इंडिविजुअल, यू नो, पुलिस ऑफिसर सर्विंग द कम्युनिटी। आप होल हार्टेडली, अगर आप उनको नहीं जानते थे पहले, तो कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम से आप उनको जानें। यू नोन बाय फेस नाउ हु ही इज़। आपके एरिया में रहते हैं, वार्ड 3 में, और जब आप अक्टूबर 24 को जाएँ, ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द एडवांस पोलिंग डेट्स? October 10th to the 16th। ओके, सो अक्टूबर 10 से अक्टूबर की 16 तारीख तक की जो एडवांस पोलिंग डेट्स हैं, उसमें जाके आप एडवांस में ही वोट डाल दीजिए इनको आप, ताकि वो मसले ख़त्म हो जाए कि 24 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड गो एंड वोट। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदिल, हु कैन वोट? Who can vote in Canada? Like if you are a PR holder, can you vote, or you have to be a Canadian citizen to vote? Yes, you need to be a Canadian citizen, 18 and above. And even for the municipal elections? Correct, yes, yeah. But there was a time that if you were a permanent resident holder, you can still vote at that time, few years ago. For general elections, for municipal, provincial, federal elections, no, that's the minimum criteria. You might be thinking of nominations perhaps for candidates for if they're selecting. So you have to be a Canadian citizen. You do. So anybody who is a PR card holder cannot vote. Cannot vote. But they can still participate in democracy by, you know, sharing things, volunteering for a candidate or things like that. Okay. So, okay. Yeah. All right. So very importantly, नाज़रीन, के Canadian citizenship होना ज़रूरी है। उस वार्ड में रहना भी ज़रूरी है। Yes. You need to be living in that ward, because you need to bring your ID and your proof of address when you go and vote that day. Yep. Advance polling starting from 10th of October till 16th of October. Mark his name, Adil Khalki, that's the name. You know him now. और the new properties का अगर आप ad देख रहे हो, हमारे पास चल रहा है, और हमारी information जो we are trying to exchange that with you. अगर आप दुबई में investment करना चाहते हैं, a great first of all place to invest, ROI, return on investment is great there. Airbnb पे जो आपको पता है कि आप उसको डाल सकते हैं और
projects जो हैं, there are a lot of projects there, but there's one company that we who are our sponsor, the new properties right now. We have a couple of more sponsors. They are coming with some new projects, but the new properties have launched Opals, OPALAZ. This is a new apartment that they have launched in heart of Dubai, starting from 300,000 and up. आपकी investment है, and you can also get the UAE residence visa for your family. So अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी किस्म की, कनाडा में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, think as a second option to invest in Dubai, very close to Pakistan, very close to India, वहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं. You can keep it for yourself for the साल में 2-3 हफ्ते के लिए, बाकी आप उसको रेंट पे डाल सकते हैं, Airbnb में दे सकते हैं. So get in touch with the new, उनका नंबर्स हमारे स्क्रीन पे हैं, और their ads are also running on our screen as well. And जाने से पहले संदीप साहब, we will get you back again on the show one of these days इंशाल्लाह again. But ऐसा कोई ख़ास मैसेज आज जो आप हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, something that you always had in your mind but never had a platform to talk about it, after you opened up Heritage India, वो क्या है? देखिए, ये जो मैंने आपसे बात की है कि ये लिटरेरी हब के बारे में, ये मेरा एक पैशन था. और जब मैंने देखा कि एक मेरे पास जगह है और मैं उसको इस चीज़ में यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो वो जो अंदर का जो एक पैशन था वो बाहर आ गया. ठीक. तो एक छुपी हुई इच्छा जो थी काफ़ी सालों से, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर साहब बहुत बड़े राइटर थे, और उनकी लिखी हुई किताबें और उनका जो साहित्य है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करता था कि क्यों नहीं ऐसी एक चीज़ टोरंटो में, ब्रैम्पटन में खोली जाए, जहाँ ये सारे लोग आकर के बैठ सके. और इन सारे लोगों को बैठा हुआ देख, चर्चा करते हुए जितनी खुशी मुझे मिलेगी, मुझे लगता है कि मेरे फादर जहाँ कहीं भी हैं उनको बड़ा सुकून मिलेगा. बेशक. Good thoughts, sir. Thank you so much for being part of Voice of Toronto live transmission tonight. Or Adil, any one more message before we go tonight to our viewers? That's your camera right there. Yeah, just to highlight what you already said, make sure everybody goes out and vote. Municipal elections in 2018 in Milton had roughly a 30% voter turnout, which is very low. I think we have a call right now. Oh, okay. Ji, Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum ji. Welcome to Voice of Toronto TV ji. जी, मेरा नाम मुराद खान है और मैं 80 years old हूँ. 80 साल मेरी उम्र है, और अभी आपका ये प्रोग्राम में देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है. अच्छा. और मैं सरदार साहब को शुक्रिया बोलता हूँ जी. और मैं इधर ब्रैम्पटन में रिहाइश है, तो इनका जो हेरिटेज वाला है जगह, उसका एड्रेस हम जरूर जाना चाहेंगे. आप एड्रेस भी बताइए सरदार जी, अपना एड्रेस बताइए जी. 485 मेन स्ट्रीट ब्रैम्पटन. 485 मेन स्ट्रीट ब्रैम्पटन सर, ये एड्रेस है. 485 मेन स्ट्रीट ब्रैम्पटन. वहाँ जाइए, आप जाके खाने जो हैं उनका लुत्फ अंदोज होइए, इनकी सर्विस से, इनसे मिलिए, इनके साथ पिक्चर खिंचवाइए, सब कुछ. असल में तो खुराक का तो इतना शौक नहीं है, इनसे मिलने का शौक है. जो इतना जबरदस्त बात किए, उस पे बहुत दिल चला गया, उधर वापस अपने वतन में चला गया. अच्छा. तो सरदार जी को हम बहुत शुक्रिया बोलते हैं कि वो इधर तशरीफ लाए हैं. बहुत दिल खुश हो गया है सरदार साहब. और ये साथ में जो आपका यंग नौजवान बेटे हैं, इनको भी बहुत सलाम. ये भी हमारा कौम का हमारे लिए फख्र है. और बहुत शुक्रिया है. हम इंशाल्लाह जरूर जाना. बहुत शुक्रिया सर, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, और आपके जज्बात का बहुत शुक्रिया. मैं कॉल नहीं करता है, मैं बस इतना मजबूर हो गया कि मैं कॉल किया.
इतना मजबूर, मेरा हाथ कांपता है। मैं बच्ची को बोला है कि ये नंबर ले लो। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। सलामत के लिए दुआ है आप सब, बहुत शुक्रिया, सलामत के लिए दुआ है। बहुत शुक्रिया। आप जरूर जाइए सरदार जी को, इनको जाके हेरिटेज इंडिया पे जरूर मिलिए सर। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। ये लोगों की बड़ी मोहब्बत है सर। असल में क्या है कि लोग जब आपको देख रहे हैं ना आज, असल में हमारे यहाँ पहले भी बहुत सारे मतलब हमारी कम्युनिटी के सरदार जी आते हैं, लेकिन वो क्या है कि कोई रियल स्टेट से है, कोई मॉर्गेजेस से है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज से है। आई थिंक लोगों का एक बड़ा ये एक हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप है खाने का जो है। नहीं, खाने के अलावा भी देखिए रेस्टोरेंट तो है ही है, खाना तो वो एक प्राइमरी चीज़ तो है ही है, पर उसके देखिए पैसा कमाना एक अलग बात होती है, पर एक दूसरी फील्ड में अगर आप कोई सर्विस कर सकते हैं, बिल्कुल, और वो नहीं, ये बहुत अच्छा आई थिंक आपकी सोच है जी कि लोगों को इकट्ठा करना, और जो डिस्पर्स लोग हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको आपने सोचा है कि मैम चाय भी पिलाएंगे, उनको हम कुछ खाना भी खिलाएंगे, उनको जगह भी देंगे। ऐसे लोग बहुत कम सोचते हैं सर। People don't think देखिए आपके कॉलर्स हैं वो उनको वही अपना याद आ रहा है कि वो भी वहीं ऐसे बैठ के बातें किया करते हैं। जैसे बताया कि आज से 20, 25, 30 साल पहले वो टी हाउस था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसको पंजाबी में ठिया बोलते हैं। हाँ, ठिया। तो उत्थे क्रीम आके बंदी सी, बॉम्बे दी क्रीम, दिल्ली दी क्रीम आके बंदी सी। एनीवे, सो मैं वही चीज कुछ यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सबकी नहीं, हमारी वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस हवाले से हम आपके लिए और जो भी कुछ कर सकें, बल्कि आपके पास जो वो आर्टिस्ट आए, जब आप उनसे मिलें, आप उन आर्टिस्टों को यहाँ लेके आएं जी, और इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम उनसे बात करें। क्या बात, जो हो सकता है कि वो वैसे आर्टिस्ट हों जो जिनको लोग सुनना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू लिसन टू देम, कि वो मतलब कोई शायर है तो कोई म्यूजिशियन है तो कोई सिंगर है तो कोई स्क्रिप्ट राइटर है। आई मीन इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और दोनों का प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, ड्राइव करके यहाँ ऑन अ फ्राइडे नाइट, और हमारे इस प्रोग्राम को एक 4 चांद लगाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। व्यूअर्स, जाने से पहले सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि वी ऑल नीड टू बी यूनाइटेड ऑन ईच फ्रंट टुगेदर। हम ना पाकिस्तान में रहते हैं, ना इंडिया में रहते हैं, हम कनाडा में रहते हैं। कनाडा में हम और आप, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वी आर ऑल ब्रदर्स, वी ऑल कम फ्रॉम द सेम रूट्स। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए इस मुल्क में रहते हुए। और कोई किसी को जॉब की तलाश हो तो एक दूसरे की हेल्प भी करें आपस में। इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, ट्राई टू हेल्प ईच अदर। आपके कुछ बिजनेसेस हैं, यू नीड, जैसे कि संदीप साहब का रेस्टोरेंट है, ही माइट बी लुकिंग फॉर अ शेफ़। हमारी पाकिस्तानी शेफ़ जो हैं वो भी इनको अप्रोच कर सकते हैं। He might be looking for servers, he might be looking for other staff members in the restaurant. So please get in touch with them for anything, और एक दूसरे का ख्याल रखें। ज़िंदगी और सेहत में वफा की तो इंशाल्लाह we'll come back to you tomorrow, which will be next Friday again with another exciting episode of live transmission of Voice of Toronto TV. I'm very always thankful to my team, and especially Amir Akhtar Saab, always behind the camera, making us look good, and thank you so much for that, and God bless. अपना ख्याल रखें, और come back to you inshallah next week again. Till then, a very good evening and very good night, and thank you for watching Voice of Toronto TV. Bye bye.